हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ आवर न्यू बैच एंड हियर आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस बैच which is going to be the special for you people, and this batch will not only help you in this exam but it will also help you in near future exams। और शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। ओके। And in previous video we had discussed about the nature and meaning of education, and in today's video we are going to learn about aims of education including individual aims and social aims। तो आइए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को आज के। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल। मोस्ट ऑफ यू पीपल डोंट नो व्हाट आर इंडिविजुअल एम्स एंड व्हाट आर सोशल एम्स। अगर हम इंडिविजुअल एम्स की बात करें, सपोज एक टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, एक स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, सो टीचर क्या करेगा, वो उस स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करेगा। मीन्स अगर स्टूडेंट एक लैंग्वेज में नहीं समझता है तो टीचर उसके मुताबिक ही लैंग्वेज यूज़ करेगा। सो इन पर्टिकुलर यहाँ पे टीचर जो है वो एक स्टूडेंट पे फोकस करता है, तो इसको हम समझ सकते हैं एज इंडिविजुअल एम। इसी तरह अगर हम सोशल एम्स की बात करें, तो अगर हम होल क्लास की एग्जांपल ले, होल क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर क्या करता है, वो सेम लेवल पे हर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। मीन्स वो इक्वल प्रायोरिटी देता है हर एक स्टूडेंट को। ऐसा नहीं है कि वो एक स्टूडेंट को अलग कमरे में बिठा के पढ़ाता है, या वो एक स्टूडेंट को अलग तरीके से पढ़ाता है और दूसरे स्टूडेंट को अलग तरीके से। मीन्स वो हर एक स्टूडेंट को इक्वल प्रायोरिटी देता है। मीन्स जो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स उसके लिए इक्वल हैं, तो इसको हम समझ सकते हैं एज सोशल एम्स। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट आर इंडिविजुअल एंड व्हाट आर सोशल एम्स। नाउ शुरू करते हैं अब हमारे टॉपिक को। जो एम्स है एजुकेशन की, उनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है इनटू द टू टाइप्स, इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स। बोथ ही जो एम्स हैं प्लेज एन एसेंशियल रोल इन हॉलिस्टिक और पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स as well as in societal progress। First of all, let's try to understand individual aims of education। इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें जो इंडिविजुअल एम्स हैं एजुकेशन की, दैट फोकसेस ऑन द होलिस्टिक और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल, मॉरल, इमोशनल, वोकेशनल दैट लीड इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव लाइव्स। सो जो इंडिविजुअल एम्स हैं एजुकेशन के, दीज एम्स हेल्प इंडिविजुअल्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एज वेल एज टू बी वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। सो ये ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बनता है आपके लिए जानना what are intellectual, moral and emotional as well as what is vocational development। So let's try to understand these aims one by one। First talking about intellectual development। ये जो aspect है एजुकेशन का, it focuses on the cultivation और development of cognitive abilities, and ultimately ये जो cognitive abilities हैं ये हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स को to think critically, to analyze information, to solve problems effectively। अगर हम इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात करें, दीज इंक्लूड्स क्रिटिकल थिंकिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल स्किल जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को टू एंगेज विद द इंफॉर्मेशन थॉटफुली as well as in making well-rounded decisions। Like it helps them to analyze ideas objectively, it helps them to assess facts or knowledge, it helps them to making logical conclusions। So जो critical thinking abilities हैं, these include objective analysis, logical assessment, informed decision making, problem solving। So ये जो critical thinking abilities हैं, these abilities help individuals to be independent thinkers as well as capable members, so that they can navigate the complexities, or we can say difficulties of the world with clarity and discernment। Next is logical reasoning। लॉजिकल रीजनिंग जो है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रूशल कॉग्निटिव स्किल जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को टू प्रोसेस, एनालाइज इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली एज वेल एज इन मेकिंग साउंड जजमेंट्स। सो ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, इट बेसिकली एनहेंस इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कनेक्ट कंसेप्ट्स एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड्स, इसमें आते हैं रीजनिंग पैटर्न्स लाइक डिडक्टिव एंड इंडक्टिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग as well as
avoiding fallacies, or we can say difficulties, or we can say illogical conclusions, and uh, और जो डेवलपमेंट है लॉजिकल रीजनिंग की, it help individuals to analyze situations critically, making well-rounded judgments, as well as in engaging with the constructive discussions. Next is problem solving skills. ये जो skills हैं, these skills are essential for solving both academic and real world challenges. ये जो skills हैं ये prepare करती हैं individuals को to face challenges with innovative solutions. और अगर हम इन skills की बात करें, these skills including identifying problem, analyzing information, generating solutions, evaluating outcomes, as well as adapting new challenges. And by promoting problem solving skills, जो education है, it help individuals to develop resilience, adaptability, as well as ability to think strategically in both personal and professional contexts. Next जो है that is creativity. जो creativity है, it also plays an essential role in education. That is by helping individuals to think beyond conventional boundaries, and in generating innovative new ideas, like through divergent thinking, innovation, adaptability, originality, risk taking. And through creativity जो education है, it empower individuals to achieve progress in various fields like in science, technology, art and social science. Suppose a student with intellectual abilities वो excel करता है almost in every field, like in engineering वो डिज़ाइन कर सकता है cost effective water filtration system for rural areas, and in health he may develop AI based diagnostic tool in order to detect diseases earlier. And in business वो create कर सकता है startups that can use sustainable materials to reduce plastic waste. So ये जो examples हैं, these examples show us that कि जो intellectual development है, that is beyond from academic career, that have basically real world impact, and that also drives innovation and progress in various fields. Now बात करते हैं second individual aim की, that is moral and ethical development. जो education है, it is not only about acquire करना knowledge को, but it is also about character formation, character development, or we can say development of moral values. जो education है, it plays an essential role in shaping individuals' character, moral values, that is through promoting empathy, encouraging integrity, and that also helps them to be responsible members of their societies. Like ethical principles जो है, these principles help individuals to differentiate between right and wrong, जो कि also encourage करते हैं उनको for fairness, justice and respect for others. Similarly, compassion and empathy जो है, it helps students to understand and care for opinions and perspectives of others. That also build emotional and intelligence. That also build their emotional intelligence, as well as a sense or we can say respect for others. Likewise जो integrity है, it encourage individuals for honest or fair conduct in personal and professional life, that also strengthening their moral courage. And by using moral and ethical teaching into education, हम खाली क्रिएट नहीं कर सकते हैं नॉलेजेबल स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स, बट हम आल्सो क्रिएट कर सकते हैं कंपैशनेट एंड प्रिंसिपल्ड मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, लाइक फॉर एग्जांपल थ्रू वैल्यू बेस्ड लर्निंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. जो स्टूडेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बन सकते हैं अपनी सोसाइटीज़ के, जो ये मेक कर सकते हैं एथिकल डिसीजंस को इन देयर कैरियर्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़. नेक्स्ट जो है, दैट इज़ emotional and psychological development. It is the third individual aim. So जो education है, it is not only about acquiring knowledge or information as we had discussed, but it is also about mental well-being, self-awareness and resilience. So जो emotional psychological development है, it includes emotional intelligence, resilience building and relationship management. Among which जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इट इज़ क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, जो कि हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को इन नेविगेटिंग और एनालाइजिंग पर्सनल एंड सोसाइटल चैलेंजेस इफेक्टिवली. इट इंक्लूड्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशंस थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग. सिमिलरली रेजिलियंस बिल्डिंग जो है, इट इज़ एन एबिलिटी टू अडेप्ट, रिकवर एंड डेवलपमेंट in the face of challenges, which is also a crucial
life skill that education promote. While schools and जो हमारी learning environments हैं, they play a crucial role in helping students in developing such type of mindset or tools uh, like growth mindset, normalizing failures as learning opportunities, developing problem solving abilities and adaptability skills, etc. Similarly, in relationship management, जो education है, it also plays an essential role in the development of interpersonal skills, जो कि हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इन देयर पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग. सो जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स हैं, दीज इंक्लूड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. सपोज एक स्टूडेंट जो कि सीखता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन स्कूल्स थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक पेयर मेडिशन, ग्रुप डिस्कशन एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स. सो ये जो स्किल्स हैं, दीज स्किल्स हेल्प हिम टू डेवलप एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटीज सच एज पेशेंस, एम्पैथी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट जो है फोर एम दैट इज़ फोर इंडिविजुअल एम दैट इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट. जो एजुकेशन इट ऑल्सो प्रोवाइड इंडिविजुअल्स नेसेसरी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स जो कि एसेंशियल होती हैं फॉर दी एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये जो स्किल्स है, दी स्किल्स प्रमोट एडेप्टेबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस एंड इनोवेशन in rapidly changing job market and in business. Vocational and skill development includes practical knowledge, economic contribution and career guidance, among which जो practical knowledge है they include hands-on training that help individuals to learn necessary skills that are directly applicable, जिनको हम various fields और industries में use करते हैं. So here ये हमें evident देखने को मिलता है कि जो learning है that's not only a theoretical process but it is also experiential process जो कि हेल्प करती हैं लर्नर्स को टू अप्लाई कंसेप्ट्स इन रियल वर्ल्ड सिनारियो. सिमिलरली इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन मतलब इन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो एजुकेशन है, इट एम्पावर इंडिविजुअल्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड एज वेल एज दैट ऑल्सो हेल्प्स देम टू पार्टिसिपेट इन नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, that is by promoting skills, innovation and productivity. Similarly, career guidance जो है also plays an essential role in helping students in making informed decisions about their future. That is by developing or we can say enhancing their interests, abilities and aspirations with suitable career paths. Like for example, जो vocational courses हैं like in carpentry, software development and healthcare, it provides students with practical job ready skills that also allows them to enter the workforce immediately after training. Next, fifth individual aim जो है that is self realization and self actualization. जो education it also empower individuals to explore their talents, interests and aspirations that ultimately help individuals to achieve their full potential both in their personal and professional life. So जो self actualization और realization है, it includes self discovery, goal setting, personal fulfillment, among which जो self discovery है ये एक एबिलिटी होती हैं जिसमें इंडिविजुअल्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेस को एंड पैशंस को, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एक्सप्लोरेशन. और जो एजुकेशन एंड पर्टिकुलर इट एम्पावर इंडिविजुअल्स in making informed life choices that also leads them towards greater fulfillment and success. Similarly, in goal setting, education it also plays an essential role in the development of such kind of skills that help individuals to create and work towards both professional and personal aspirations like clarity of aims and purpose, strategic planning, perseverance and motivation, effective goal setting techniques. So ये जो skills हैं, these skills empower individuals to take charge of their future and achieve success in their own field. Similarly, in personal fulfillment, जो education it also plays an essential role that is through promoting sense of achievement, purpose and lifelong growth. And by developing intellectual curiosity, personal passion, education had help individuals to lead towards purposeful and fulfilling lives. Suppose एक स्टूडेंट जो कि एक्सप्लोर करता है डिफरेंट आर्टिस्टिक टेक्निक्स इन स्कूल्स, सो उससे क्या होता है, उसमें एक पेशन डेवलप होता है फॉर पेंटिंग. सो विथ encouragement from teachers and
with the assessment to necessary resources. वो रिफाइन करता है अपनी स्किल्स को, डेवलप करता है यूनिक स्टाइल, और वो इवेंचुअली रिनाउड पेंटर बनता है, और वो यूज़ करता है अपने आर्ट को टू इंस्पायर कम्युनिटीज़ एंड टू एंड एज वेल एज दैट also he also use his art to communicate profound ideas. Next जो है that is sixth individual aim, that is cultural and aesthetic development. जो एक्सपोजर है आर्ट्स और कल्चरल एजुकेशन का, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट डाइवर्स ट्रेडिशंस, हिस्ट्रीज एंड वर्ल्ड व्यूज, दैट इज बाय डेवलपिंग एम्पैथी एज वेल एज बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंट कल्चरल एक्सप्रेशंस. और डेवलपमेंट जो है क्रिएटिविटी की, इट इंक्लूड्स इनोवेटिव थिंकिंग थ्रू म्यूजिक, लिटरेचर, विजुअल आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी जो है इन पर्टिकुलर इट एनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग इंडिविजुअल्स. Similarly, cultural appreciation जो है in education, it help individuals to understand and respect different traditions as well as values. Like it promotes open-mindedness among students towards different cultures, as well as it helps them to connect with their own cultural roots, and that also prepares them for cross-cultural communication in this interconnected world. Similarly, artistic expression जो है in education, it encourages students for innovation, that is through music, painting, dance and literature, जो कि also enhance करती हैं उनकी cognitive and emotional growth को, as well as that also preserves and transmits cultural heritage. Similarly, aesthetic sensibility जो है it develops an ability of individuals to appreciate the harmony, balance and creativity in art, music and nature, जो कि also डीपन एनहेंस करती हैं उनकी इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, एज वेल एज दैट आल्सो सपोर्ट्स देयर इथिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो कि पार्टिसिपेट करता है इन क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम्स, वो डेवलप करता है डीप एप्रिसिएशन फॉर इट्स स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड इमोशनल डेप्थ, एंड ओवर टाइम वो ये जो स्किल्स है, मतलब ये जो पार्टिसिपेशन है उसकी, इट इंस्पायर हिम टू pursue a career as a musician, composer or conductor. Other than that, it also enhances his creativity in other fields like in writing, film and even engineering. Anyhow, by promoting intellectual, moral, emotional and practical growth, जो education है help individuals to develop necessary skills and values that are important for navigating or analyzing life's challenges, pursuing aspirations as well as for contributions towards the well-being of their communities. So ये जो well-rounded education है, it not only enhances their personal fulfillment but it also strengthens their fabric of society, that is by productive, informed, ethical and engaged citizens. That is by producing informed, ethical and engaged citizens. Now let us discuss social aims of education. जो सोशल एम्स है एजुकेशन के, दीज एम्स हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशन इन क्रिएटिंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, प्रमोटिंग सोशल हार्मनी एंड ड्राइविंग कलेक्टिव एंगेजमेंट along through civic education, ethical training and cultural awareness. जो education है, it also help individuals to develop a sense of duty towards their communities, as well as that also helps them to address societal challenges effectively. Now talking about these social aims one by one. First जो है that is social cohesion and integration. By promoting mutual respect, tolerance and understanding, जो education है, it help individuals or societies to bridge cultural, religious, ideological differences, and it also promotes a sense of national identity while encouraging appreciation for diversity, that ultimately strengthening their social cohesion or harmony. Social cohesion and integrity includes promotion of national unity, tolerance as well as building harmonious society, among which जो promotion है national unity की, in which education जो है वो play करता है essential role, that is by developing a sense of belongingness and shared purpose by focusing on common values, history and civic responsibilities, and through subjects like social studies, history, ethics, जो individuals हैं वो also सीखते हैं appreciate करना अपने nations की heritage को, while they also respected diversity और culture. So ये जो unity है, it also strengthening social stability, and that also encourages cooperation for collective progress. Similarly, encouraging tolerance means by exposing students to different cultures, philosophies and worldviews,
जो एजुकेशन एंड प्रमोट्स ओपन माइंडेडनेस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, लाइक teaching conflict resolution, ethical reasoning, and inclusive dialogue that help individuals to reduce societal divisions and promote peaceful coexistence. और जो स्कूल्स जो कि फोकस करते हैं और मल्टी कल्चरल एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दे डेवलप एन एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू एंगेज constructively with diverse perspectives. Similarly, in building harmonious societies, जो education had help individuals to create a shared sense of purpose, that is by teaching ethical principles, civic responsibilities, and collective problem solving. However, हमारी जो schools और universities हैं, they act as a microsomes of societies in which जो individuals हैं from different backgrounds, they interact, collaborate, and learn to coexist. And by developing basic values such as justice, empathy, and cooperation, जो education had lays down the foundation for the more harmonious and inclusive societies. Suppose for example studying historical events जहाँ diverse communities collaborate करते हैं, like Andalusian period of coexistence, which is a coexistence period between Muslims and Christians as well as Jews. So ये जो exposure है historical events का, it can teach students the value of mutual respect, cooperation, and in turn it will also help students to develop such kind of mindset that values social harmony, peaceful conflict resolution in contemporary societies. Second जो है that is citizenship and training. जो civic education had promotes awareness of rights and responsibilities among individuals, that also encourages them to participate in democratic processes, uphold justice, and to engage in community service. Like understanding of rights and duties, it can teach citizens the constitutional rights and responsibilities, such as in civic participation, जो individuals हैं they can inspire to vote, they can attend public meetings, and they can also participate in governance, as well as it also educates citizens about the laws for informed and lawful participation in society. Similarly, in participatory democracy, जो students हैं they are also be encouraged to actively participate in political processes like vote and community engagement, that also strengthening their democratic values, जिनमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्रिटिकली एवेलुएट करते हैं पॉलिसीज़ को, लीडर्स को, एज वेल एज सोसाइटल इश्यूज़ को, एज वेल एज इन विच जिनमें वो एंगेज होते हैं इन वेरियस डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑन पॉलिटिकल एंड सोसाइटल मैटर्स, दैट अल्टीमेटली जो कि उनको प्रिपेयर करती है टू टेक ऑन लीडरशिप रूल्स इन देयर कम्युनिटीज़ एंड बियॉन्ड. सिमिलरली, जो civic awareness है, it provides deeper understanding to individuals regarding various social issues and solutions, like through community service, environmental awareness, as well as through human rights awareness. Suppose जो civic education classes हैं, these classes prepare students to better understand legal rights, community engagement, and respect for democratic values, that ultimately develop necessary knowledge and skills amongst individuals that is basically needed for productive workforce. Now third social aim जो है that is economic development. जो education है it also act as a fundamental stone of economic development that develop necessary skills among individuals that are necessary for economic productivity, जो कि ultimately lead करते हैं individuals को towards human capital development, innovation, and economic expansion. और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इट कैन टेक प्लेस थ्रू स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएशन, like entrepreneurship development and technological advancements. Like in skilled workforce creation, जो education had plays a key role in developing such kind of workforce who had a specialized knowledge and expertise that is essential for national progress and economic stability. Similarly, entrepreneurship development in which education जो है वो promote करती है entrepreneur thinking that develop basic skills and mindset of individuals in order to innovate, create businesses, and to contribute towards economic growth. Similarly, जो technological advancements हैं जिसमें education जो है वो also play करता है essential role, that is through promoting research, development, and ultimately that results in innovation and economic growth. Like for example, STEM education जो है it develop necessary analytical and technical skills among
students that are basically essential for problem solving, research and technological advancements. और countries जो कि specifically focus करते हैं in STEM education like USA, Germany and South Korea, ये जो countries हैं, these countries have strong economies which are mostly driven by innovation in various fields like artificial intelligence, biotechnology and space exploration. फोर्थ सोशल एम जो है दैट इज कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड प्रोग्रेस. जो एजुकेशन एट प्लेस ड्यूअल रोल इन preserving cultural heritage and in promoting critical thinking for progress, that is through intergenerational knowledge transmission of civic and ethical values, as well as through art, music and literature, and through questioning established norms, adapting modern technologies, etc. So, जो cultural preservation and progress है, it includes preserving traditions, cultural evolution and intercultural understanding. Like if we talk about preserving traditions, जो education है, it serve as a bridge between generations, जो कि play करता है essential role in passing down folk tales, history, art and literature to future generations. Similarly in cultural evolution, education जो है, it not only preserves cultural traditions but it also promotes critical thinking and societal progress that also enables societies to adapt to new realities and to question traditional practices. Similarly in intercultural understanding, जो education it also plays a vital role like in promoting appreciation of diverse cultures, mutual respect and building global harmony. Like for example literature classes जो है वो introduce करवाते हैं students को with a diverse world authors like Rumi, Shakespeare, Tagore, etc. So ये जो उनका exposure है, it basically promotes cultural appreciation and understanding, and by engaging with various world literature, students जो हैं वो develop करते हैं respect for diverse cultures, and that also ultimately develops tolerance and empathy as well as global mindset among them. फिफ्थ सोशल एम जो है दैट इज सोशल मोबिलिटी. जो एजुकेशन है ये एक्ट करता है एज अ पाथवे टू सोशो इकोनॉमिक mobility, that is by providing opportunities for individuals in order to improve their socio-economic status, that also allow them to improve their income, social status and overall well-being, that ultimately leads them towards more equitable, prosperous societies. So जो social mobility है it includes equal access to opportunities, empowerment and reducing inequalities, among which जो equal access to opportunities है जिसमें education जो है वो play करता है essential role that basically act as a powerful equalizer that ensures कि हर एक individual जो है उसको equal chance, equal opportunity मिलनी चाहिए to succeed regardless of their background, and through which जो societies हैं वो also break down करती हैं cycles of poverty, that also empower individuals and that also promotes a more just and prosperous world. Similarly empowerment जो है इसमें also education act करता है as transformative process जो कि help करती हैं individuals को, especially disadvantaged groups, to improve their socio-economic status. So education जो है also empower them to take control of their lives, challenge injustice and to contribute meaningfully towards their societies. Likewise in the reduction of inequality, जो education है it also act as a powerful tool that basically bridges socio-economic disparities, that is by providing equal opportunities for all individuals regardless of their background. So by promoting equal access, skill development and social mobility, so education had plays a crucial role in reducing inequality and in building a more just and equitable society. Like for example जो scholarships हैं वो दिए जाते हैं marginalized communities or we can say poor or backward sections of societies, that basically provides them financial support so that they can access higher education and they can secure better employment opportunities. Sixth social aim जो है that is environmental awareness and sustainability. जो education है it also plays a crucial role in promoting environmental consciousness as well as in encouragement of sustainable behavior, like environmental programs in schools. These programs teach students about climate change, conservation, renewable energy and various initiatives like tree planting campaigns and
eco clubs. These initiatives empower students to take real world action in protecting environment. So जो environmental awareness और sustainability है, it includes ecological literacy, sustainable practices and global responsibility, among which जो ecological literacy है, it develop necessary knowledge and skills among individuals so that they can understand natural ecosystems, as well as they can also recognize environmental challenges, and they can also contribute towards sustainable solutions, and they can that basically also teach students about local wildlife, water conservation, sustainable farming, and that ultimately prepares them to make informed environmental decisions in their daily lives. Similarly, जो sustainable practices हैं in education, these practices promote environmental responsibility among individuals, जो कि encourage करती हैं individuals को to reduce waste, conserve resources and to protect ecosystems. Like sustainable practices जो कि कंडक्ट किए जाते हैं इन स्कूल्स, these practices encourage students to use reusable water bottles, and these lessons also teach students about climate action. सो ये जो इंटीग्रेशन है इन इस करिकुलम का, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है इन प्रैक्टिसेस का इन करिकुलम, दैट बेसिकली डेवलप लाइफ एंड लाइफ लॉन्ग इकोनॉमिक हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स. सिमिलरली जो एजुकेशन है, इट ऑल्सो प्लेस एन क्रूशियल रोल इन ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी through preparing individuals to address global challenges, particularly climate change, natural resource conservation. So it develops an awareness about environmental issues, and it also develops necessary skills and mindset of individuals that is basically needed to take responsible actions on global scale. सपोज फॉर एग्जाम्पल जो एनवायरमेंटल साइंस हैं, साइंस प्रोग्राम्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स, दीज प्रोग्राम्स एडुकेट स्टूडेंट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, एंड थ्रू हैंड्स ऑन रिसर्च, फील्ड स्टडीज़ एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीखते हैं हाउ टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स एंड वेस्ट रिड्यूसिंग systems. Now talking about seventh one, that is social justice and equity. So education it also promotes inclusive and equal opportunities for all members of the society, irrespective of their gender, socio-economic status, disability or ethnicity, which ensures that कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक इन सोशल जस्टिस. मतलब एवरी इंडिविजुअल हैव टू assess resources equally, and every individual have a sense of justice, equity. So it includes gender equality, anti-discrimination and inclusive education. Like अगर हम gender equality की बात करें, it provides equal access to education for all genders. That also challenge gender stereotypes, provides safe and inclusive learning environment to all, like initiatives such as STEM programs for girls. These programs encourage female participation in science, technology, engineering and mathematics that are basically traditionally dominated by men, these fields. Similarly, जो education it also plays an important role in anti-discrimination, that basically reduce divisions based on race, religion, socio-economic background. That's through inclusive curriculum, equitable policies, base awareness, training and support system. Similarly, जो education है, it also plays an important role in providing equal opportunities of education for all, including children with special needs, as well as children belonging to marginalized or poor groups. So जो inclusive education policies हैं, these policies ensure that कि हर एक student जो है, regardless of their abilities, background, they must be feel valued and supported in learning environment. Suppose for example, universal design for curriculum, UDL, it includes flexible curricula, diverse teaching strategies and adaptive assessments that basically help students with the different learning needs to develop to grow, like schools जो कि students को सिखाते हैं in different languages, that basically promote a sense of belongingness and equal participation for all learners.
Anyhow, ये जो social aims हैं, these aims together contribute towards building a more just and progressive as well as sustainable societies, जिनमें individuals जो हैं वो work करते हैं together for collective well-being, and by integrating all of these social aims into the education, जो societies हैं वो develop cultivate कर सकते हैं in informed, responsible and compassionate citizens, जो कि actively contribute कर सकते हैं towards just progress and sustainability. ना बात करते हैं बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। जब इंडिविजुअल और सोशल एम्स को बैलेंस किया जाता है, व्हाट हैपन्स इज दैट अल्टीमेटली उससे क्या होता है, क्रिएट होता है सच टाइप ऑफ सोसाइटी जिसमें नॉलेज जो है वो एक्ट करते हैं एज अ टूल फॉर बोथ पर्सनल फुलफिलमेंट एज वेल एज फॉर होल सोसाइटी। और जो ट्रू एजुकेशन सिस्टम है दैट बेसिकली रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स जो हैं एजुकेशन के, these aims are not separate but these aims are mutually reinforcing that support each other, and जो पर्सनल डेवलपमेंट है वेदर इन इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड प्रोफेशनल डायमेंशंस, these aspects help individuals to be responsible and engaged members of their societies. At the same, एक वेल फंक्शनिंग सोसाइटी जो है इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल्स दैट हेल्प दैट प्लेस एन एसेंशियल रोल in their development, and that और ये जो बैलेंस है between individual and social aims, it is also a key for creating responsible, fulfilled citizens who can also contribute positively towards their nations. And when both of these aims are at equilibrium, first these aims seems to be an interconnected, और हम ऑब्जर्व करते हैं डीप कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोशल एम्स, लाइक म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट जो है वो टेक प्लेस होता है, सच एज अगर हम जब पर्सनल ग्रोथ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर इंडिविजुअल्स को डेवलप करती हैं इंटेलेक्चुअली, मॉरली, इमोशनली, वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली टुवर्ड्स देयर सोसाइटी। लाइक वाइज जस्ट और सपोर्टिव सोसाइटीज़ जो हैं दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंडिविजुअल्स टू डेवलप। और जब इंडिविजुअल्स एंगेज होते हैं विद वेरियस सोशल वैल्यूज़ लाइक जस्टिस, कोऑपरेशन एंड सर्विस, वो ऑफन फाइंड करते हैं डीप सेंस ऑफ पर्पस एंड फुलफिलमेंट इन देयर लाइव्स, एंड वो also contribute करते हैं towards societal progress, and that ultimately provides them a sense of belongingness and meaning that also provides meaning to them. Similarly, personal success जो है such as societal good, जब इंडिविजुअल्स अचीव करते हैं सक्सेस इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली, वो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर्स बनते हैं अपनी सोसाइटीज़ के। उनकी जो एक्सपर्टाइज, स्किल्स, नॉलेज, लीडरशिप और क्रिएटिविटी होती है वो उनको हेल्प करती हैं इन सॉल्विंग सोसाइटल चैलेंजेस, ड्राइव प्रोग्रेस। सपोज फॉर एग्जांपल स्किल्ड इंजीनियर जो है वो खाली ड्राइव नहीं करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को थ्रू इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट दैट आल्सो हेल्प्स हिम टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लाइक डिज़ाइनिंग ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन। सिमिलरली एक कंपैशनेट टीचर जो है वो नर्चर करता है यंग माइंड्स को थ्रू डेवलपिंग सोशल हार्मनी, इक्वालिटी एंड मॉरल वैल्यूज among students, which ultimately also shape more just and inclusive society. Likewise, जो social responsibility और personal fulfillment है, these aspects are deeply interconnected also. जब individuals recognize करती हैं अपने actions को, वो contribute करते हैं towards greater good, और वो also experience करते हैं great sense of purpose, satisfaction and self worth. सेकेंड जो है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स इन करिकुलम। एक इफेक्टिव करिकुलम जो है वो प्ले करता है एसेंशियल रोल इन बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स, दैट आल्सो प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आल्सो हाईलाइट करता है कि जो एजुकेशन है दैट इज़ हॉलिस्टिक, जो कि प्रिपेयर करता है लर्नर्स को टू लीड फुलफिलिंग लाइव्स, एंड दे आल्सो एनेबल देम टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स देयर सोसाइटी। लाइक इट इंक्लूड्स हॉलिस्टिक एजुकेशन, जिनमें लर्नर्स जो है वो डेवलप करते हैं, वो डेवलप होते हैं इन मल्टीपल डायमेंशंस इंक्लूडिंग इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, इथिकली एंड वोकेशनली, in order to be well-rounded individuals, और जो कि also contribute करते हैं meaningfully towards their societies। और एक well-rounded curriculum जो है इसमें include किए जाते हैं various subjects like science, technology, literature, art, social studies, ethics, life skills। so ये जो subjects हैं these subjects prepare individuals for both personal growth and societal contribution। so ये जो इंटीग्रेशन है इंडिविजुअल और सोशल एम्स का इनटू द करिकुलम, इट
aims at to develop intellectual depth and social responsibility among students so that they can develop the necessary skills that are needed or that are necessary to analyze, empathize and innovate in ever changing world. Similarly, जो integration है life skills और civic engagement का into the education, it basically highlights that कि जो students हैं वो खाली knowledgeable नहीं होनी चाहिए but also socially responsible होनी चाहिए, emotionally intelligent होनी चाहिए, जो कि actively contribute कर सकते हैं towards their communities. और ये जो key life skills हैं these include कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलिजेंस, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो कि आल्सो प्रिपेयर करती हैं, जो कि खाली प्रिपेयर नहीं करती हैं इंडिविजुअल्स को फॉर पर्सनल सक्सेस बट जो कि आल्सो उनको प्रिपेयर करती है फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटियल डेवलपमेंट एज वेल एज सिविक एजुकेशन, वॉलंटियरिज्म और इथिक्स जो हैं दे आल्सो प्रमोट active citizenship that also teach students how to make choices effectively that can affect their communities. Similarly, जो vocational education है that not only prepares students for their personal success but that also teaches them how to use their skills that can benefit society as a whole. Like for example, healthcare professionals, engineers और environmental scientists हैं वो directly contribute कर सकते हैं towards societal well-being as part of their careers. Third जो है that is balance between these aims also promote sense of responsibility. Like self discovery की अगर हम बात करें, well rounded education system जो है it help individuals to understand themselves as well as it also helps them to develop a sense of duty towards others and society. और जो true discovery है that's not only about realizing personal ambitions but that is also about recognizing one's role in larger community. It includes self discovery through education. So education it also plays a crucial role in helping individuals to explore their identities, passions and potential, that is through self awareness that ultimately allow individuals to understand their unique strengths, skills and aspirations. एंड थ्रू दिस प्रोसेस जो एजुकेशन है ये खाली हेल्प नहीं करती है इंडिविजुअल्स को टू आइडेंटिफाइज देयर स्ट्रेंथ्स बट इट आल्सो हेल्प्स देम इन देयर पर्सनल गोल्स. और जब इंडिविजुअल्स चूज़ करते हैं अपने कैरियर और लाइफ पाथ्स को वो मोर एंगेज्ड, मोटिवेटेड, कैपेबल इंडिविजुअल्स बनते हैं और वो मेक करते हैं मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स देयर सोसाइटीज़. सिमिलरली सोशल अवेयरनेस जो है इन विच जो एजुकेशन है वो आल्सो प्ले करती है एसेंशियल रोल. और जो एजुकेशन है वो खाली डेवलप नहीं करती है इंडिविजुअल्स को पर्सनली बट इट आल्सो प्रमोट्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इशूज़ लाइक दैट help individuals to be empathetic, responsible members of their societies. और educate करना individuals को about global issues, social justice, environmental challenges. It help individuals to recognize how their actions can affect the wider world. और ये जो awareness है it also promotes responsible decision making and commitment towards positive change among them. Similarly, balanced world view जो है it help individuals to combine personal aspirations with collective well-being. That also promotes self-fulfillment, social responsibility among them. So basically it highlights that कि जो true success है that's not only about personal fulfillment but that is also about making meaningful contributions towards their societies and to promote unity, peace and prosperity in society. Fourth जो है that is collectively both individual and social aims जो है these aims promote social cohesion through individual contributions. So education had plays a crucial role in promoting social harmony and cohesion through developing such individuals जो कि value करते हैं diversity, justice, equality को along with personal growth. It includes understanding diversity. Balanced education system जो है it promotes respective mutual understanding of different cultures, cultural, social and ethnic backgrounds that ultimately help students to be more inclusive, to be empathetic members of their society. Similarly, in active citizenship जो education है it also plays an essential role in shaping responsible and engaged citizens जो कि positively contribute करते हैं towards their societies. And by teaching citizenship and social responsibility to students जो students जो हैं वो also सीखते हैं actively participate करना अपनी communities में और वो uphold करते हैं, वो सीखते हैं democratic values और वो work करते हैं towards societal progress. Active citizenship जो है it extends beyond voting and volunteerism.
It also includes upholding and promoting positive values like honesty, fairness and compassion in everyday life. और ये जो values हैं, these values shape ethical societies जिनमें justice, equality, mutual respect prevail करता है. Likewise जो education है, it also plays a crucial role in shaping the mindset and behavior of individuals towards sustainability, that ultimately help individuals to understand that की जो true success है, that's not only about personal fulfillment but that is also about to healthy environment and just society. So in this way जो education है वो खाली create नहीं करते हैं, वो create नहीं करते हैं division between personal achievement and social progress. Instead जो true education है develop a mindset of individuals जिनमें individual की जो success है वो directly contribute करती हैं towards sustainable and equitable development. Fifth जो है that is practical approach to balance individual एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन. जो अचीवमेंट है और जो बैलेंस है बिटवीन पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की इन करिकुलम डिज़ाइन, टीचिंग मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शनल पॉलिसीज. लाइक सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स जो हैं, दीज प्रोजेक्ट्स आर पावरफुल एजुकेशनल अप्रोचेस जो कि इंटीग्रेट करती हैं एकेडमिक नॉलेज को विथ मीनिंगफुल कम्युनिटी सर्विस, जो कि कंबाइन करते हैं इन दो एस्पेक्ट्स को. और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, दीज प्रोजेक्ट्स नॉट ओनली हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स बट these aspects also helps them to contribute towards societal well-being. Similarly जो कोलेबरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स हैं, दे फोकस ऑन टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड शेयर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि अल्टीमेटली प्रमोट करती है बोथ पर्सनल कॉम्पिटेंसीज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये जो टाइप है एजुकेशन का, इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, दैट इज बाय एनकरेजिंग देम फॉर कोऑपरेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट. लाइकवाइज जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, दे आर ऑल्सो पावरफुल टूल्स फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स इन देयर बोथ personal growth and societal responsibility. And by connecting learners with experienced mentors, ये जो programs हैं, these programs help them to develop confidence, skills and sense of purpose while also understand their role in contributing their role of contribution towards their society. Sixth जो है, that is role of educators in balancing individual and social aims of education. जो educators हैं, teachers हैं, वो play करते हैं crucial role in shaping well-rounded individuals such as जो individuals जो कि खाली परस्यू नहीं करते हैं पर्सनल सक्सेस बट जो कि आल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स देयर सोसाइटीज़, जिनमें जो एजुकेटर्स हैं वो प्ले करते हैं एसेंशियल रोल. एंड बाय गाइडिंग स्टूडेंट्स इन सेल्फ डिस्कवरी एंड सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी, जो टीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू क्रिएट ए हार्मोनियस एंड balance between their own needs and social aims of education. Like in holistic development, जो teachers हैं वो play करते हैं crucial role, that is by nurturing individuals potential and social consciousness, so that जो students हैं वो well rounded individuals बने और जो कि also positively contribute करे towards their society. Similarly जो teachers और mentors हैं वो play करते हैं wider role in shaping students character and values and by teaching them social responsibility through their own actions and by promoting justice, responsibility and compassion. जो educators हैं वो इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट्स को to practice such values in their personal and professional life. Likewise, they also play a crucial role in creating inclusive classrooms for individual growth and social cohesion. In inclusive classroom, हर एक स्टूडेंट जो है वो फील करता है valued regardless of their background, ability or identity. So वो फील करता है valued, respected and empowered. And by promoting inclusivity, जो educators हैं वो promote करते हैं personal development as well as they also promote sense of social unity that prepare students for the development or achievement of excellence in diverse societies. Overall अगर हम देखें जो बैलेंस है बिटवीन इंडिविजुअल एस्पायरेशंस एंड societal responsibilities and in education, it is more than just a pedagogical challenge जो basically serve करता है as a moral obligation as well as a necessity for more just and progressive societies. और जो well designed education system है that must empower individuals for personal collective well-being
पर्सनल एंड कलेक्टिव वेलबींग सो दैट उनकी जो पर्सनल सक्सेस है दे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ए ग्रेटर गुड। और जब इंडिविजुअल्स फील करते हैं एम्पावर्ड दे परस्यू पर्सनल सक्सेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बोथ इंडिविजुअल्स और जो सोसाइटी है दे टुगेदर प्रोग्रेस। सो ये जो इंटरकनेक्टेड अप्रोच है इट हाईलाइट्स दैट की जो पर्सनल एम्बिशंस है they cannot be only achieved through collective well-being but they can also be achieved through contribution towards harmonious and progressive societies। so guys ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, और आप मुझे आल्सो फॉलो कर सकते हैं ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। Don't forget to share, like and subscribe to DC Blunt Talk channel. Thank you for watching.